Now, Pakistan is one of the country where we have the places which are prone to earthquakes, and most of the areas are closer to the fault lines. So these fault lines are actually between the two tectonic plates, and when these two plates are moving toward each other, they are actually in the form of convergence, and most of the convergence boundaries are to the north of the Pakistan, whereas the western side, which is actually closer to the Arabian plate, Pakistan has transform बाउंड्रीज वो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर बाउंड्रीज टेक्टोनिक प्लेट्स की मौजूद हैं उनमें मोस्टली जो साउथ की तरफ से आ रही है दैट इज़ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जो नॉर्थ की तरफ से है वो यूरेशियन प्लेट है, और वो कन्वर्जेंस बाउंड्री बना रही है टू द नॉर्थ और टू द सम ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ द पाकिस्तान. Now, geographically or we call it geologically, पाकिस्तान जो है उसमें हाफ ऑफ द जो प्रोविंस है उसके जैसे पंजाब प्रोविंस और इंड सिंध है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है, वेयर एज खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर मौजूद है. सो हम ये कह सकते हैं कि 50% ऑफ द पाकिस्तान इज़ ऑन द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट and 50% is to the north of the area, which is to the north, and the western side of Pakistan is on the Eurasian plate. So इसमें जो regions involve हैं वो mostly north of Pakistan है, west of Pakistan है, and south western part of Pakistan है. सो मोस्टली ज़्यादातर जो मेजर फॉल्ट्स हैं और उसके साथ जो पैरेलल फॉल्ट्स हैं वो इन्हीं एरियाज़ के साथ मिलती हैं. नाउ लुक एट द मैप ऑफ द रीजन. हेयर वी हैव डिटेल description of the countries which are located over these plates. Now this is Indo-Australian plate is moving upward and Eurasian plate is moving southward. So this area is under convergence region. So is one of the dangerous part of the country where we have the earthquakes is actually continent to continent convergence. Now this region is actually under the again the convergence boundary, but the Arabian plate is moving upward and the Indo-Australian plate is again moving upward. So here some of the area is under the transform boundaries. Now this slide can easily recognize the situation of the area where most of the region is moving upward. तो इसमें देख लें आप कि अरेबियन प्लेट की मूवमेंट ये है और इसी तरह से इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी तरह से मूव कर रही है ऊपर की तरफ. तो ये मकरान कोस्ट का एरिया यहाँ पर जिसमें हमने रिसेंटली देखा 2013 में बलूचिस्तान जो अर्थक्वेक आया जिसे हम आवारान का अर्थक्वेक कहते हैं वो इस वजह से आया कि यहाँ पर मूवमेंट जो थी वो मौजूद है प्लेट्स में. वेयर एज जो ये वाला रीजन है जिसे हम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान कहते हैं या जिसमें नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का रीजन आता है वो इस कन्वर्जेंस के अंडर मौजूद है. 2005 8 अक्टूबर जो बालाकोट अर्थक्वेक आया वो इसी कन्वर्जेंस की वजह से आया क्योंकि ऊपर से प्लेट नीचे की तरफ मूव कर रही है एंड इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है. Now in 2013, over 350 people have been killed in an earthquake measuring 7.7 at Richter scale, which struck southwest of Avaran, Balochistan, Pakistan. Over 300,000 people were affected by the earthquake, while 21,000 houses were destroyed, the damage costing over $1 billion. सो इस अर्थक्वेक की वजह से बलूचिस्तान में जो हम 2013 में जो अर्थक्वेक आया आवारान में उस वजह से हमने देखा कि जो ग्वादर के करीब एक जजीरा भी नमूदार हुआ और ये तमाम जो जियोलॉजिकल चेंजेस हैं ये
अर्थक्वेक की वजह से हैं, क्योंकि प्लेट्स यहाँ पर मूव कर रही हैं और उस वजह से यहाँ पर गवादर के साउथ में हमें एक जजीरा नुमा भी नज़र आया. Now, in 2005, 8th October, an earthquake occurred in Kashmir, Pakistan, near Balakot. It registered 7.6 in magnitude. There were many secondary earthquakes in the region, mainly to the northwest of the epicenter. In first day, about 147 aftershocks were registered, and about 1,000 aftershocks within 2 months of the major earthquake were monitored. Now here we see the convergence between the two plates, the tectonic plates. This is Indian plate is moving downward, and the Eurasian plate which is moving upward. So this one is denser than the upper one. So that's why it's moving downward. तो फ्रिक्शन यहाँ पर मौजूद है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कन्वर्जेंस की सूरत में है, और ये माउंटेन जो है जिसे हम हिमालय कहते हैं ये इस आर्क में मौजूद हैं. वेयर एज कराकोरम इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ जो है हिंदू कश भी आते हैं. सो ये तमाम जो सीरीज़ ऑफ रेंजेस हैं जिसमें हिमालय, कराकोरम और हिंदू कश हैं, ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में एक नॉट बनाते हैं, यानी ये तमाम तीनों रेंजेस आपस में मिली हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, गिरा की तरह से हैं. और दैट्स वाई दिस प्लेस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ऑल द रेंजेस आर मर्जिंग एट दैट पॉइंट. सो इस एरिया में पामीर नॉट भी मौजूद है. सो नॉट मीन्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री रेंजेस. Now, since then, measurements from satellites have shown that the mountain parts directly above the epicenter have risen by a few meters, giving ample proof that the Himalayas is still going on, and this earthquake was a consequence of that. Now, this slide shows that the most of the faults are to the north of the area, and to the western side of the region also. Now, this one actually the area which is under the MKT, major Karakoram thrust, and then this one area which is under the MMT, major mantle thrust, and then this one the area which is under the MBT, major boundary thrust. So three areas are to the north of Pakistan and to the northern part of the Punjab also. So that's why we have most of the epicenters of this place. Why? Because of the maximum boundaries are located there. Not only MKT but MMT and MBT also. Now this part is actually under the thrust zone also. This place is the Chaman fault area, and this is actually the Makran or Keithar range area. So this place is also very important for the earthquakes. Now major fault line के साथ साथ आप देखेंगे कि माइनर फॉल्ट्स भी मौजूद हैं, और ये माइनर फॉल्ट्स भी earthquake generate कर सकती हैं in future. Now, Pakistan is an earthquake prone country. A number of earthquakes have hit Pakistan, resulting the damages of the properties, but the most important thing is the human lives. So the settlement areas are mostly located on those four fault lines. फ्यूचर में हमें ये देखना होगा कि ये तमाम जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ना हों. अगर हों तो वहाँ पर ऐसे तमाम हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए जिससे इन ह्यूमन लॉसेस को फ्यूचर में बचाया जा सके. सो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है जिसे हम PMD कहते हैं, प्रेजेंटली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 11 seismic stations. By using recorded data, the seismicity and zoning maps of Pakistan have been developed by this department, and they are doing very well in this part of the area where we have the seismic systems, and this system must be in future can change the history of the nation.